Now this is the experiment number 4, and you are seeing the objective is to determine the focal length of concave mirror by obtaining the image. Okay, and now we have to find out the focal length of the concave mirror. Okay, this is the basic things. So I think you have already studied in the previous the basic concept of this experiment in the previous video, and now I will tell you how will you find the focal length of the concave mirror. Focal length of the concave mirror. Okay, so I think you have remembered that when the object placed at the infinite in the front of the concave mirror, then image formed at the focus. And I think also know that we put the object any distance, different distance, so the image formed by the concave mirror be different, and excluding one condition, the concave mirror always form the real and inverted image. Means the image can obtained on the screen. Okay, students. So now I will tell you what is the apparatus requirement. So apparatus requirement I am showing you. This is the optical bench. Okay, I am showing you this is the optical bench, and this is a mirror holder you are seeing here. We can hold the concave mirror. I have one concave mirror. This is a concave mirror I have. You are seeing here, and we can hold the concave mirror. We hold the concave mirror by mirror holder, and you are seeing the scale. You are seeing the 100 divisions. This is 100 divisions. I am seeing very clearly, and I think you also seeing. And I am showing you the total optical bench from 0 to this is 10, this is 20, this is 30. So you are seeing here, and our mirror holder placed at 100 divisions. You are showing the pointer. This is a pinpoint, and 100. It means the mirror hold at the 100 centimeter. 100. Okay, student? Yes. This is the next. We have next other mirror holder, and this is the pin holder. We can put the pin here. We can put on. So there is no requirement of this parts of the optical bench to find the focal length of the concave mirror, but I am showing you to complete optical bench. Okay, this is a pin holder.
So now this is not requirement, so I avoid in present time, and it has requirement. So first again we study the basic concept. I think you are seeing here, this is a concave mirror, and the concave mirror and the rays of light distant object indicate coming from infinite point. Then after reflection, you know, the all ray of light reflect from this point, but after reflection they meet at the focus, approximately focus. Okay students, so you can also say that this is a rough focal length because they are not exactly focused, because the infinite position is not any different length. So this is a, you can say this is a rough focal length, mean near about. You can also say that this is a focus point, near focus point, about approximately near focus point. And you can also, this is a focus and we can find out the easily to find the focal length, focus point, and then after we measure the distance between focus and pole is called the focal length. Okay, if you found the, this is a concave mirror, if you find the focus point of this mirror, then we measure the distance between the mirror and the image is called that is the focus point, and the distance between the focus and pole is called the focal length. So now we have to find out the focus point. Okay, we have to find out the focus point. So I am telling you how will you find the focus point. So you know, you already know in the previous video, if we put the object infinite point, so this is not this is not possible to perform inside the lab, inside the room. We can go in the outside and we will see the a very far away a tree object very far away, like tree or any other like pole, anything जो कि बहुत दूर हो, उसको जितना दूर हो उतनी ठीक है. तो suppose that we are in the lab, but if you go to outside and we will see the image of the tree or any other things, those are very far away, like 200-300 मीटर डिस्टेंस पर हम लोग देखते हैं उसका इमेज. तो सपोज दैट यहाँ पर जो मेरी विंडोज़ है बहुत काफ़ी डिस्टेंस पर है स्लैब की, और इसका हम देखते हैं, इमेज देखते हैं. तो विकास जी एक आई हैव a drawing board you are seeing here, and I paste a white sheet here, and when the ray of light coming from object and falls on this mirror, after reflection they meet actually at the point and the image formed that point. We will trace the image on this board like this, यहाँ पर देखेंगे like this, and we will decide the focus point. When the focus point, and then after we will measure the
distance between the distance between mirror and distance between the pole of the mirror and image. So now we will go the outside from the lab with this instrument, with the instruments. So we will go. Okay, it's good. Now I am going to outside from the lab, and you are seeing very far away. I think we are seeing a very large. इसको बीच में रखिए. हाँ. Very far away you are seeing, and you are also seeing the trees, and there is a very large distance between the trees and me, very large distance. I think you are seeing very clearly. प्रकाश जी यहाँ लेके आइए, उसको नीचे दीवार पे रख करके यहाँ ले आइए. Very far away you are seeing. That is an image of the tree, and we will make the image of the tree through the mirror, and then we will see the actually point of the focus of the concave mirror, and finally we will measure the distance between the focus and the pole of the mirror, and finally find out the length. Okay, now now our optical bench, and I am present outside the lab, and we are seeing the trees. So we will make image formed by the concave mirror. This is a concave mirror. I am showing you. Wait a few minutes. I am showing you. Image formed by the concave mirror, but I am showing you. विकास जी तो इसको पकड़िए, इसको पकड़िए. ये यहाँ ऐसे, हाँ, जहाँ से इमेज बनती है. आई एम शोइंग यू. बस सेट कर रहा है. यस, I think you are seeing the image, that image. छोड़ दीजिए. Clearly. ये एक मिरर के बगल में एक वाइट लाइट आपको आ रही है, और वाइट लाइट को जस्ट आप देख रहे होंगे कि that is the image of the tree. That is the image of the tree. Okay. I am showing very clearly. I think you are also showing very clearly. That image formed by the concave mirror. That is the image formed by the concave mirror, and yes, you are seeing here. And now we will measure the distance. Okay, if you take another mirror, that is different focal length, that will be different focal length. So now I am measuring the, because scale उठाइए, because scale लीजिए, scale देखिए. Now I am measuring the distance between the image and the focal length. Okay, so it will be, I think, here you are seeing here, it is 95.
स्केल यू आर सीइंग द 95 स्केल, 96 है, 96 पॉइंट पर, 96, ओके, 96 पॉइंट पर. So 96 here, and the position of the image is 100 and 96. Okay. Here the image formed at this point 96. So the distance between 100 and this, that is a 96 and 100, that is 6 centimeter. So 6 centimeter the focal length of this mirror, concave mirror. 6 centimeter is the focal length of the concave mirror. So now we will find out the reading. So now here you are seeing the position of the mirror is 100 centimeter you are seeing, and position of the stand is 96. So the focal length 100 minus 96 is equal to 6 centimeter, 6 centimeter and 6 centimeter. You can note it in the book and you can note it in the file. And finally conclusion is the focal length of the concave mirror is 6 centimeter. Precautions: the distance to object should be large enough and clearly visible naked eyes. Precautions: and the image formed should be well defined. The edge of the image must be visible and the sharp of the positions. If the screen is not smaller than the mirror side, the screen should be placed to the side of little. Then reading should be taken between the center of the stands. You know, the screen, because when we put the object in the front of the concave mirror at the infinite position, so the image formed point size, image formed by the mirror is point size, real and inverted. Because the image formed real and inverted by concave mirror, so you know, the image formed at the screen. तो अभी आपने देखा कि आपने स्क्रीन पर आपने उसको जज किया, चेक किया. तो अगर हम उसको डिफरेंट पोजीशन पर और ले जाते हैं तो डिफरेंट होगा, बट ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन बिकॉज द कॉनकेव मिरर फॉर्म्ड द रियल एंड इन्वर्टेड एक्सेप्ट वन कंडीशंस. वो कौन सी कंडीशंस हैं? व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड द फोकस, उसको छोड़ करके बाकी सभी कंडीशंस पे रियल एंड इन्वर्टेड होंगी. तो इस कंडीशंस पर हम लोग ये देखेंगे कि इमेज आपकी स्मॉल होनी चाहिए, और इसके बाद आपका डिफरेंट कंडीशंस और ले जाएंगे तो आपका डिफरेंट वहाँ पर बनेगा. सो लेट्स स्टार्ट. फाइनली हम लोग 5 मिनट्स हम लोग इसको और चेक करते हैं कि इसका एक बार कुछ समराइज़ कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको. टोटली फाइनली हम लोग समराइज़ करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं. सो our objective is to determine the focal length of concave mirror. Okay, focal length of concave mirror. And first you know the basic concept of this mirror, कि how different formation of the image. It is a must, and I think it is a must to know the formation of the mirror, different position of the object in the front of the concave mirror, different position. तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट पोजीशन पे कैसे बनता है और एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए वो. सो नाउ अब उसके बाद आपको ये मालूम हो गया, जैसे आपका ये अभी मैं आपसे आई एम आस्किंग यू द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइड रियल एंड इन्वर्टेड. तो तुरंत आपको बताना चाहिए, तुरंत आपको ये मालूम होना चाहिए. तो अब आपको क्या करना, इस कंडीशन में चूँकि फोकल लेंथ ओनली निकालना है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको. कैसे? आपको एक कॉनकेव मिरर्स हैं जो भी आपने आपको आई हैव शो यू, और कॉनकेव मिरर्स को आपको बताया नहीं कैसे होता है. कॉनकेव मिरर्स जो आपका इनर साइड आपका होल आलो होता है, अपर साइड आपका पॉलिश्ड होता है, दैट इज़ अ कॉनकेव मिरर. एंड कॉनकेव मिरर में भी आपका देखते हैं कि और उसको क्या करते हैं, ऑप्टिकल बेंच. आई हैव शोन यू द ऑप्टिकल बेंच, मिरर होल्डर,
and scales आपने you have seen this that, and then you can put the, then you will take a position. मैंने I have taken the position of the 100 on the 100 on the on the optical bench, but you have taken any position. I think ये नहीं जरूरी है कि आप 100 ही लो. You can take any position, like you can take the 0 position, 50 position, 10, 20, or anyhow, anything. And you set the, you put you put the you, and you hold the mirror at their position conditions, and you will note down. जैसे मैंने 100 ले रखा था यहाँ पर, 100 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा था कि 100 पर हम इसको रखेंगे, 0 पर रख सकते हो, कैन पुट 0. And now then you can put then you, because इनर साइड हम लोग लैब के अंदर हमको हो सकता है डिस्टेंस 20 मीटर्स हो, 30 मीटर्स हो, इससे ज़्यादा तो मैं पॉसिबल नहीं है. बट सपोज दैट इफ़ यू गो आउटसाइड फ्रॉम द लैब एंड वी विल सी द वेरी फार अवे ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका बहुत दूर पर है. सपोज दैट 200 300, तो जो मैंने आपको दिखाया था ट्रीज़, आई थिंक दैट द डिफरेंस बिटवीन द दैट ट्रीज़ एंड मी इज़ मिनिमम 2 or 300 मीटर्स. तो वहाँ से मैंने आपको इमेज आपको शो करके दिखाया था. तो उस कंडीशन में क्लियरली होना चाहिए. तो देन आफ्टर वी विल ट्रेस द इमेज. We will trace the image of the concave formed by the concave mirror. हमने ट्रेस किया था ऑन द स्क्रीन. अभी आपने यू हैव सीन द स्क्रीन. हमने ट्रेस किया था और ट्रेस करके फिर हमने आपको शो किया था उस कंडीशंस को. तो आपने उस कंडीशन को शो करके आपको दिखाया था. जैसे ही वो ट्रेस किया तो देन वी होल्ड दैट पोजीशन, द स्क्रीन एट दैट पोजीशन, एंड फाइनली वी विल मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द पोल ऑफ द concave mirror, and that measurement is called the, suppose at 96 position, that position of the stand is 96, so then focal length is equal to 100 minus 96, that is a 6 centimeter. 6 centimeter is the focal length of the concave mirror, right? तो डिफरेंट मिरर में डिफरेंट हो गए, किसी का 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबका 6 ही होगा. आप 6 ही पर रखोगे, आप डिफरेंट लोगे तो डिफरेंट ही होगा. सो ये आपका हो गया. थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इन दिस वीडियो कि व्हाट इज़ द पोल. सपोज दैट किसी कोई स्टूडेंट्स दे हैव नॉट टेकन द क्लास ऑन डे एंड प्रीवियस डेज. सो पोल इज़ द क्या? पोल इज़ द सेंटर ऑफ द अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. जैसे आपका ये है, आपका ये मिरर, तो एक पॉइंट बीच में होता है, पोल होता है. दैट्स द पोल. प्रिंसिपल एक्सिस, यू आर सीइंग द प्रिंसिपल एक्सिस, and the distance between the principal axis and center is called the radius of curvature. This is the radius of center of curvature. Center of curvature क्या होता है? This is the center of the spherical shell and it is also called the center of curvature. तो ये इस यहाँ से सभी का डिस्टेंस इक्वल होता है. That is and the midpoint of the C and P is called the focus point. That is focus. That will be focus point. And the difference between the focus and pole is called the focal length. Okay. So now I have shown you, and you can watch this video minimum 2 or 3 times. You can get very accurate concept, very accurate. And finally मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि when you will come in the lab, I think we have a very short time to complete our the next few experiments. सो मैं आपसे यही कर रहा हूँ कि आप यू विल टेक योर लैब क्लास रेगुलरली. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, यू कैन रेज योर क्वेश्चंस आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो. इफ़ हैव एनी क्वेरीज यू कैन शेयर मी. सो आप उसको जब कोई भी क्वेरीज हों, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, आप शेयर कर सकते हैं मेरे इस वीडियोज़ में. वीडियो के लास्ट में आप जैसे ही वीडियो को लास्ट में हो जाए, एंड हो जाए, तो आप शेयर करिए.
और वीडियोस को मिनिमम 2 टाइम ज़रूर देखा करिए। आप भी टाइम हो या बाद में शाम को टाइम, कभी भी टाइम मिले आप ज़रूर देखिए और उसको नोट करिए। सो यू हैव नोट, तो नोटेड क्या करना है, ऑब्जेक्टिव नोट करना है, मैंने आपको शो कर दिया है और उसको मैंने पोस्ट करूँगा, इसका मैंने पिक भी आपको भेज दूँगा, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और कुछ गूगल मीट से भी आपकी क्लासेस में स्टार्ट कर लूँगा। तो जैसे रिज़ल्ट आ गए 6 सेंटीमीटर, प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो now